Hello. So hello guys, welcome back. Welcome back to my YouTube channel. अभी मैं थोड़ा सेटिंग कर रहा था, that's why थोड़ा सा टाइम लग गया, थोड़ा सा. So इस वीडियो में we are going to understand. लास्ट टाइम मैंने वीडियो में बात किया था, लाइक कि मैंने समझाया था what is REST API. एंड इस वीडियो में हम इन लाइव स्ट्रीमिंग में we are going to understand how can we implement a REST API, how can we make a REST API um, through Spring Boot application. Okay, right. So as you can see on my board, सबसे पहले we are going to understand the flow, that what is that the flow and how can we um, implement. Okay, so I'll be okay. I'll be saying what are the steps we need to take. ठीक है. सबसे पहले अगर REST API का तुमने वीडियो नहीं देखा है कि व्हाट इज़ RESट API, जाओ मेरे चैनल पे है वो, तुम जा करके देख लो. एंड विद स्प्रिंग बूट सबको पता है कि इट्स अ फ्रेमवर्क. सो इस फ्रेमवर्क के थ्रू वी आर गोइंग टू मेक द REST API. ओके. सो in the step one, I'll be dividing and implementing the REST API and try to elaborate in a very simple way. Okay. So step one, सबसे पहले we need to हम लोग को, since spring is all about the dependencies, right? So we are going to um, inject some dependencies through spring.io. एक वेबसाइट है, ठीक है. उसके थ्रू वी आर गोइंग टू मेक अ प्रोजेक्ट. ठीक है, एक हम लोग एक मेविन प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे. ओके, आई विल शो यू इन अ बिट. ठीक है, वो कैसे करते हैं. सबसे पहले ये करेंगे. स्टेप टू, वी आर गोइंग टू यू नो वी आर गोइंग टू हमने डिपेंडेंसीज ऐड कर दी. नाउ वी आर गोइंग टू आईडी में हम लोग उस प्रोजेक्ट को हम वी आर गोइंग टू import, right? Step this is step one, this is step two, this is step three, right? And in the step three, we are going to अब हम लोग बनाएंगे, हम लोग कौन से आर्किटेक्चर पे वी आर गोइंग टू मेक दिस REST API. So we are going to use the MVC. It is nothing but it's a model view and controller. ठीक है. So this is ये था step 3, model view controller architecture के through we are going to build our REST APIs. And step 4, run our application. Okay, this is the thing. Okay, now okay, ये था, right? REST API कैसे अपन लोग बनाएंगे. ठीक है. अब now we are going to understand like how the communication will happen. So very simple है. Initially कैसे काम करता है, ये क्लाइंट है एंड दिस इज़ आवर सर्वर. ओके, तो सबसे पहले क्या होता है ना कि क्लाइंट, लेट्स से एक एप्लीकेशन है, यहाँ से एक रिक्वेस्ट आएगा सर्वर पे.
This is request, and after that we will send back the response. तो इसको हम लोग REST API के फॉर्मेट में हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। एंड एक और चीज़, हम्म, जो ये सर्वर है ना, वी आर गोइंग टू बिल्ड दिस सर्वर लाइक दिस। इनिशियली जो हमारा जो रिक्वेस्ट आएगा ना, द रिक्वेस्ट विल फ्लो लाइक दिस। इट विल कम फर्स्ट टू द कंट्रोलर, and after that it will go to the service, and then after that, yeah, hi Jawal. Then after that it will go to the DAO, and the DAO is connected with the database, right? The database something is here, and यहाँ से जो डेटा चाहिए वो उसको वापस से रिवर्स बैक करेगा. It will go back to the service, and it will go back to the controller, and the controller will send back as a response ons to our client. Client यहाँ पे देखो, client, good night. Yeah, good night sir. um the client is, client जो है हम लोग का nothing but it's a front end application. Okay, it's a front end application. So this is the overall view, right? um it's will like this. The request, okay, and request come to the controller, and this will go to the service, and the service will interact with the DAO, and the DAO will be interacting with this is controller, this is service, okay, and this is data access object, it's a DAO, and this is the database. This is all about the theory part. तो हम लोग को लाइक की रिकैप हम करवा रहे हैं यहाँ पे, लाइक कि कैसे हम REST API बात करता है. REST API talks with the help of HTTP methods, right? This is the main thing. Okay, now अब हम लोग इसको practically implement करते हैं. How can we do that practically? So step one, let's, yep, step one, we need to come here. Okay, spring.io Maven build में हम लोग को जाके projects को हमको project बनाने होंगे. Okay, I'll show you how can we do that. So simple, you have to go to the Google Chrome and just type spray start.spring.io. ये वाले वेबसाइट पे अपन लोग को आ जाना है. And after that, you'll see here the project, and here is a language. There is a dependency on the right side. Spring Boot का कौन सा version we are going to use, ठीक है? And there is some project metadata, like what is the group and what is the artifact you are giving, what is the name of this project, and the description of this project is here.
एंड इनिशियली जो हम लोग का जो स्टार्टिंग स्प्रिंग का जो इनिशलाइजर क्लास जो रहेगा वो स्टार्टर वाला हम लोग किस पैकेज में किस नाम से रखेंगे, एंड पैकेजिंग किसका रहेगा, जार का रहेगा कि वॉर, ठीक है, एंड विच जावा वर्जन्स यू आर गोइंग टू यूज, ठीक है. For in this video we are going to use the Java 17, okay, and the Maven we are going to the project हम लोग को बनाना है किस तरीके से, हम लोग को Maven के थ्रू बनाना है, and the language is Java, right, and Spring Boot, um, okay, Spring Boot 3.4.2 as similar जैसा है वैसे ही मैं हम लोग यूज़ करेंगे, and the example we are going to give like we will give com dot rest dot api and artifact में हम लोग let's give an example name here, okay. देखो यहाँ पे नेम और artifacts दोनों सेम ही रहेंगे, एंड यहाँ पे डेमो प्रोजेक्ट्स फॉर स्प्रिंग बूट रेस्ट एपीआई, ओके. दिस इज द पैकेज जो बिल्ड होकर के आएगा, and now here we need to add the dependencies. So click on the add on dependencies and just add spring web. You simply type web, sorry, this is the spring web dependencies which helps to make restful web services, okay. इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, okay, right. And before generating yeah, packaging, we need to give the jar file, and the Java we are going to add the Java 17, and before generating this file we need to explore, and you can see here whatever we have given, like the group ID we have given here com.rest.api, okay, and the artifact we have given the example, right, and here the descriptions for the project यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं. तो इस तरीके का pom.xml फाइल जनरेट होकर के हम लोग के पास आएगा पूरे, ये पूरा एक zip फाइल में, देखो example.zip फाइल करके ये पूरा डाउनलोड हो जाएगा, राइट. सो इसको हम लोग डाउनलोड करते हैं, ओके, जनरेट, it will simply downloads, you will go to the control J, you will see here like यहाँ पे एक zip फाइल डाउनलोड हुआ, ठीक है. एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, तो सिंपली भी हम वो एक्सट्रैक्ट करके दिखाते हैं तुम्हें. लेट्स से वी विल आई शो यू. ओके, वेयर इट इज गॉन ब्रो. इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है. एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक एक्सट्रैक्ट हो रहा है अभी. नाउ हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं, ठीक है. Eclipse तुम लोग खोल, Eclipse वी आर गोइंग टू नाउ गोइंग टू
build our project. देखो इसमें सर्विसेज हम लोग ज़्यादा नहीं बनाएंगे. वी आर गोइंग टू मेक ओनली वन सर्विस बिकॉज ऑलरेडी बहुत रात हो गया है और मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ. ठीक है. I guess no one is there, so we can postpone this live streaming and we will continue together. What do you think? I guess because no one is joining yet. It's better to stream tomorrow. Okay, guys.